my channel. Hello friend, today I am going to teach you Dover Beach by Matthew Arnold. It is the term 2 English literature syllabus of ISC board. The upcoming exams they are going to be conducted. Term 2. The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair. Upon the straits on the French coast the light gleams and is gone. The cliffs of inland stand glimmering and vast out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air only from the long line of spray. Where the sea meets the moon blanched land, listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling at their return up the high strand. Begin and cease, and then again begin with tremulous cadence, slow and bring the eternal note of sadness in. The first paragraph of this poetry, Dover Beach, composed by Matthew Arnold. First of all, I would like to give you the introduction of Matthew Arnold. He was born in 1822 and an English poet and cultural critic, whose work remains amongst the best known of 19th century English poetry. उनका जो काम था वो 19th century की English poetry में सबसे बेहतर माना जाता है. He wrote on a variety of subjects, but is best known for his poems on nature, modern society, and moral instruction. उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में लिखने के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको जाना जाता है उन्होंने नेचर के लिए पोइट्रीज लिखी, मॉडर्न सोसाइटी के लिए लिखी और अपनी पोइट्री से मॉरल इंस्ट्रक्शन दिए. Always remember the literature which we are reading of anyone of the year or era. It is the reflection of the society. What has been happening in that society. उस समय समाज में क्या हो रहा होता है हमारे पास उसका knowledge होता है literature के through. Arnold is sometimes called the third great Victorian poet along with Alfred, Long, Tennyson and Robert Browning. Arnold was keenly aware of his place in poetry. In an 1869 letter to his mother, he wrote, "It might be fairly urged that I have less poetical sentiment than Tennyson, and less intellectual vigor and abundance than Browning. Yet because I have perhaps more of a fusion of the two than either of them, and have more regularly applied that fusion to the main line of modern development, I am likely enough to have my turn as they have had theirs." So, Sir Edmund Chambers judged Arnold's poetic vision by. अब इतना लिखने के बाद सर एडमंड चैम्बर्स ने अर्नॉल्ड का जो पोएटिक विजन था उसको जज किया. इट्स सिंप्लिसिटी, ल्यूसिडिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, इट्स literalness, the sparing use of aureate words. Aureate, the word means that something is made up of gold, जैसे डॉलर होता है या किसी चीज में गोल्ड का यूज किया हो, or of far-fetched words which are all the more effective when they come. The avoidance of inversions and the general directness of syntax which gives full value to the delicacies of a varied rhythm and makes it, of all words that I know, the easiest to read aloud. So the poem Dover Beach, which was written in 1867, is a dramatic monologue and presents the ephemeral human feelings of sadness through the image of the sea. The poet expresses his view that the despair, hopelessness, and frustration in the world is due to the decline of religious faith. The poem is marked by an elegiac tone. Elegy लिखा जाता है, मॉर्निंग पोएट्री होती है वो और दुख भरी होती है. तो इसकी जो टोन है, at the beginning it's everything, the beauty of the nature is being described, but later on
he is describing about what is happening in the modern world, in the real world. So first, I would like that you should underline these difficult words. I'll be posting the meanings of these difficult words next time. So, this monologue that also has a sonnet form, the poem begins with calm, pleasant and soothing description of Dover Beach. ये इस पूरी पोम में the sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair. जब टाइड होता है उस समय मून फुल मून होता है, उस टाइम पर टाइड आते हैं. Upon the stage on the French coast the light gleams and is gone, the cliffs of England stand glimmering and vast out in the tranquil bay. Come to the window, sweet in the night air, only from the long line of spray. So, this poetry is basically based upon the Dover is a city in England. Actually, जो डॉवर बीच की बात हो रही है, तो डॉवर एक सिटी है इंग्लैंड में और that is famous for white cliffs. So this city you may make a note point in your copy कि ये डॉवर बीच जो है एक सिटी है इंग्लैंड में. It is a city in England that is famous for white cliffs. तो ये famous है white cliffs के लिए. The beach lies between England and France. अभी जो बीच है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सिचुएटेड है. The poet is on the England side and is watching the coast of France. The time is that of night. अब poet जो है वो इंग्लैंड साइड पे खड़े हैं और वो देख रहे हैं फ्रांस के कोस्ट को. That is why French coast is written. So begins with the romantic tradition style that is using simple language. The poet says, the sea is calm tonight. आज समुद्र शांत है. Poet is describing the peacefulness of the surrounding area of the sea on that night, the particular night. The line is complete in itself and simply means that everything is calm and fine. तो ये खुद में complete line है जो बताती है सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा है. In the next line, he vividly described the vista around him. अब अगली लाइन पे वो अपने चारों तरफ का जो दृश्य है, जो सीन है, उसको बता रहे हैं. According to the poet, as usual, the tide is full and the moon is lightening the straits. According to him, tide is full, the full moon night is there. That is why moon is also lightening and spreading its light on the coast. And on the other side, the France coast, the light glimmers and then vanishes like the twinkling. Gleams and is gone. अब फ्रेंच कोस्ट पे क्या हो रहा है, जो लाइट पड़ रही है फ्रेंच कोस्ट पे वो चमकती है और चली जाती है. मीन्स इंग्लैंड के कोस्ट पे तो पूरे फुल नाइट फुल मून है, पूरा टाइड है, अच्छा है, सब कुछ रोशनी है, सब चमक रहा है. बट ऑन द अदर साइड फ्रेंच कोस्ट में जो लाइट है वो चमकती है लेकिन वो चली जाती है. द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड. नाउ so like the twinkling of the stars when the light vanishes, the poet sees the white cliffs which are shining in the moonlight. Ab the cliffs of England we have already talked about. We are talking about Dover Beach and that place is famous for the white cliffs. अब जो इंग्लैंड के जो white cliffs हैं वो खड़े हैं, वो चमक रहे हैं. glimmering and vast. Glimmering, they are shining. Vast means they are very big. Out in the tranquil bay. Tranquil means peaceful. So, in the moonlight on the shore of England, probably the light on the French side vanishes because white cliffs block the rays of moonlight. So, glimmering and vast, out in the tranquil bay, come to the window, sweet in the night air, only from the long line of spray. तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि बहुत शांत बे है वहां पर. कम टू द विंडो, स्वीट इन द इज द नाइट एयर, मतलब रात की जो हवा है वो बहुत शांत है, बहुत अच्छी बह रही है. ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे. सो दे आर
Probably the light on the front side vanishes because white cliffs block the rays of moonlight. Now, for the time in the poem, the poet interacts with his wife. He requests her to come to the window. अब come to the window, poet अपनी wife से request कर रहे हैं कि आप विंडो पे आइए. फिर वो उस रात की तारीफ बता रहे हैं, उस रात की. he is praising that night and enjoy the pleasant air of the night. He then asks her only from the long line of spray. He then asks her using the word only. यहाँ पे जो only word उन्होंने use किया है, वहाँ पे वो कहते हैं to focus on the edge where the sea meets the land. Long line of spray. Long line of spray का मतलब है where the sea meets the moon blanched land. यहाँ पर समुद्र जो है मून के द्वारा जो रोशनी फैली हुई है वो धरती से मिलता है. लिसन, वो उनको कहते हैं सुनो. यू हियर द ग्रेटिंग रोर, तुम्हें चट्टानों की दहाड़ने की आवाज सुन रही हो. ग्रेटिंग रोर मतलब जोर से आवाज आना. जब पानी चट्टानों से टकराता है जो आवाज आती है. सो ही इज आस्किंग हर टू लिसन टू इट. इन द नेक्स्ट लाइन द मूड ऑफ द पोएट सडनली चेंजेस. How? Where there is a shift from ecstasy to sorrow. अब यहाँ पर ये तो बहुत खुश होके वो बता रहे हैं रात बहुत अच्छी है. वो अपनी वाइफ से भी कहते हैं कम टू द विंडो और देखो नाइट कैसी है. पर यहाँ पे उनका मूड ऑल ऑफ अ सडन ही चेंजेस इट मूड. तब वो कहते हैं यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स व्हिच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग. यहाँ वो कहते हैं कि लिसन to the unpleasant and harsh sound of pebbles. They are pulled out by the strong tides and turned back on the shore when the tide returns. क्या तुम उस दहाड़ने की, चट्टानों के दहाड़ने की आवाज को सुनती हो जो वेव से टकरा करके वापस, वेव्स उनसे टकराती हैं और वापस आ जाती हैं एट देयर रिटर्न, और लौटते हुए अप द हाई स्ट्रैंड, और लौटते हुए while turning back on the shore when the tide returns. The process is continuous and the poet focuses on their rhythmic movement. यहाँ पे वो बताते हैं कि लगातार भाई जब टाइड्स आते हैं सी में तो वो लगातार होते हैं. बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, पत्थरों से टकराती हैं, चट्टानों से टकराती हैं और वापस आ जाती हैं. बिगिन एंड सीज, शुरू होती हैं, बंद होती हैं, एंड देन अगेन बिगिन, फिर से वो उठती हैं with tremulous cadence, slow and bring. So here the process is continuous and poet focuses on their rhythmic movement. The movement of pebble is tremulous, cadence, slow. They are trembling in slow rhythmic movement. The rhythmic sound of pebbles mingles with that of the poem. This movement of the pebbles with terrible sound is of course not pleasing and brings out the note of music that is sad and never ending. अब वो यहाँ उस साउंड के बारे में बता रहे हैं जो साउंड उठता है, नीचे आता है और वो अच्छा नहीं है. उनके हिसाब से वो शुरू होता है, बंद होता है, फिर से शुरू होता है. लेकिन जो उसका उठना और अंदर आना है वो द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, वो उस तरह की म्यूजिक को बताता है जो कि कभी न खत्म होने वाली सैडनेस. सो आई विल फॉरवर्ड यू द अंडरलाइन वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड in my telegram link. Please you may look forward there also and read it. This is the first part of this poetry, the first stanza I have taken here. I have explained because long poetry and it takes time to explain. So keep on watching. Just like and subscribe my channel, and I'm waiting for your valuable comments which still I am not getting. With tremulous cadence, जो tremulous cadence है इसका मतलब है एक trembling sound है. जो रिदम होती है, वेव्स की जो रिदम होती है उसको ट्रेमलिंग साउंड, कांपती हुई आवाज बोलते हैं, और वो ऊपर नीचे आती है
तो एज पर मैथ्यू अर्नोल्ड द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, वो इनकी तुलना एक हमेशा रहने वाली दुख से करते हैं जो कि कभी नहीं जाएगा. तो ऑल ऑफ ए सडन द मेन पॉइंट ऑफ दिस स्टैंजा इज ऑल, पहले तो वो नेचुरल ब्यूटी आपके सामने बता रहे हैं, एंड आफ्टर दैट ऑल ऑफ ए सडन ही चेंजेस हिज व्यू, एंड वी ऑलरेडी told you it is a dramatic monologue, है ना. So we have to see, and that is pathetic fallacy. ये जो आपकी लाइन है, begin and cease and then again begin with tremulous cadence, slow and bring. So the phrase pathetic fallacy is a literary term of attributing human emotion and conduct to object in nature. The effect is best seen in the lines where endless motion of sea waves is compared to eternal note of sadness. तो pathetic fallacy वो होती है जिसमें inanimate object को हम animate object की तरह समझते हैं, जो शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है, तो इसमें हम eternal note of sadness we have means endless motion of sea. sea का motion क्या है कि वो उसकी लहरें उठ रही हैं, उसकी लहरें टकरा रही है, वापस आ रही हैं, तो वो एंडलेस मोशन जो उसका है उसको हम पैथेटिक फैलेसी कहेंगे. तो यहाँ जो हमारी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो पैथेटिक फैलेसी है. Please keep on asking, and I'm waiting for your valuable comments. Please like, subscribe and share this. It will be really helpful for you. Thank you.